नर्मदा भूमि अधिग्रहण में भेदभाव, किसानों को मिला आधा मुआवजा। नर्मदा परियोजना के तहत अधिग्रहण में एक बार फिर भेदभाव का मामला सामने आया है। यह मामला गुजरात के बनासकांठा जिले के वाव तालुका स्थित वाव गांव से जुड़ा हुआ है, जहां किसानों को समान परियोजना के बावजूद असमान मुआवजा दिए जाने के आरोप लगाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार नर्मदा निगम द्वारा एक वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण किया गया था। LAQ केस नंबर 84/2024 और 79/2024 के तहत जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई, उन्हें जंट्री दर का 2 गुना मूल्य, साथ ही 12, 9 और 15% ब्याज सहित मुआवजा दिया गया। लेकिन इसी परियोजना के अंतर्गत LAQ केस नंबर 173/2024 में आने वाली सर्वे नंबर 1620.001 की जमीन के बीच किसान को केवल जंट्री दर का 0.5 गुना मुआवजा दिया गया, वह भी ब्याज में कटौती के साथ। इससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। किसान वेंजिया नरेश कुमार राणा जी ने बताया कि उन्होंने इस आंशिक मुआवजे का चेक स्वीकार नहीं किया, फिर भी सरकारी रिकॉर्ड में उनकी जमीन को अधिग्रहित दर्शा दिया गया, जो कानून और न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। किसान ने मामलतदार कार्यालय को लेकर उच्च अधिकारियों और केंद्र सरकार तक कई बार लिखित शिकायतें दी हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई या जवाब नहीं मिला है, जिससे प्रशासन की संवेदनहीनता उजागर हो रही है। किसानों की मांग है कि जब तक पूरा और समान मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक भूमि अधिग्रहण की एंट्री स्थगित की जाए और शेष जंट्री मूल्य व ब्याज सहित न्याय संगत अवार्ड घोषित किया जाए। न्याय न मिलने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, जिससे पूरे वाव क्षेत्र में हलचल मच गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को गंभीर रूप से लेता है या नहीं। वाव थाना से दशरथ भाई ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। जय जवान जय किसान। हूँ आपना माध्यमथी जणाववा मागुं छुं के नर्मदा निगम जमीन संपादन अंतर्गत जे स्थगित कार्य हतुं ते हमणां 9 महीनाथी चालू करवामां आवेल छे। तेना अंतर्गत वाव तालुके वाव गामनी माइनोर 1, माइनोर 2, माइनोर 3, माइनोर 4 અને જોડિયા ડિસ્ટ્રીબ્યુટરની અંદર જમીન સંપાદનનું વળતરનું ચૂકવણું કરવામાં આવેલ છે, જેમાં સૌપ્રથમ માઇનોર 1 અને માઇનોર 4નું ચૂકવણું કરવામાં આવેલ હતું, જેની અંદર જંત્રી ભાવના 2 ગણું વળતર, 12%, 9% અને 15% વળતર ચૂકવવામાં આવેલ છે। તો તે જ વર્ષે તે જ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત માઇનોર 2ની અંદર જે 2 ગણું જંત્રી ભાવના 2 ગણું વળતર ચૂકવવાનું હતું, એની અંદર 1.5 ગણું ચૂકવેલ છે અને 12% વ્યાજ ચૂકવેલ નથી। તેના અનુસંધાને અમોએ મામલતદાર કચેરીથી કરી અને માનનીય શ્રી પ્રધાનમંત્રી સુધી રજૂઆતો કરેલ છે, પરંતુ તેનો કોઈ યોગ્ય નિકાલ નથી આવેલ। તેના અનુસંધાને અમે ગતરોજ મામલતદાર સાહેબશ્રીને અનુલક્ષીને સંબોધિત કરીને એક પત્ર કર્યો છે કે અમે જે યોગ્ય વળતર અમને ચૂકવવામાં અમે સરકાર પાસે કોઈ વધારે નથી માગતા, પણ જે આગળની માઇનોર 1 અને માઇનોર 4ની અંદર જે ચૂકવણું કર્યું છે એના અનુસંધાને અમને ચૂકવણું કરવામાં આવે। બાકી જો આ લોકશાહી દેશની અંદર જો એક આમ નાગરિકનું કોઈ સાંભળવામાં ના આવતું હોય તો અને આગળ અમારો કોઈ નિવેડો ના આવે તો અમે બીજું તો શું કરો? આ જ માઇનોરને અને આ જ નર્મદા નિગમની કેનાલની અંદર અમે પડી અને અમારું જીવન ટૂંકાવીશું। બીજું તો અમે આ નાના ખેડૂત શું કરી શકીએ? ભારત માતા કી જય।